अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ोहैब नवीद है और मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई एम वर्किंग फॉर अ टेलीकॉम कंपनी इन इस्लामाबाद और आई एम अ प्राउड कस्टमर ऑफ ज़ील इंजीनियरिंग फॉर लास्ट 4 इयर्स। द रीज़न मैंने ये डिसाइड किया कि नेट मीटरिंग और सोलर सोल्यूशन पे जाना है इज़ बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात बढ़ती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, बट ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ आवर कंट्री इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्यों ना सेल्फ सफिशेंसी के ऊपर जाऊँ और मैं अपनी प्रोडक्शन करूँ। एक तो मैं अपना ग्रीन फुटप्रिंट एनवायरनमेंट पे उसको इंडोर्स करवा सकूँगा, दूसरा आई कैन हैव अ फाइनेंशियल बेनिफिट्स एज वेल। It is a long journey. In fact, Zeal ko I started following them on a very first Facebook page. I think back in 2015 and 17. I was not in Pakistan at that time. I was working in Middle East. तो मेरा इरादा था कि मैं one day when I'll be coming back to the home country, मैं इनसे ज़रूर जो है ना इनकी सर्विसेज इनसे लूँगा और मैं सोलर लगवाऊँगा। तो then I installed their network by I think 2020. जी मैंने आई प्रेफर्ड नेट मीटरिंग सोल्यूशन। द सोसाइटी इन विच आई एम रिजाइडिंग राइट नाउ, यहाँ पे लोड शेडिंग के इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है। द मेन इशू इज़ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और उसके लिए मैंने फिर नेट मीटरिंग सोल्यूशन का डिसीजन किया। आई चूज 10 किलोवाट इन्वर्टर, नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड इन्वर्टर, और उसके साथ फिर मैंने 7.4 kW की PV अरे स्टार्ट में उसको मैंने कमीशन किया। And then over the passage of time, I increased it by another 1.5 kilowatt, which is sufficient for my current requirement. जी इससे एक तो ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द एनवायरनमेंट। दूसरा ये है कि इसका मॉनेटरी बेनिफिट है और सो फार आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। ROI is around 3.5 year when I installed this system back in 2020. So मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मंथली बेसिस पे एक ड्रास्टिक किस्म की रिडक्शन आई और विंटर सीजन में तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो और इवन ऑन द क्रेडिट साइड। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आजकल बढ़ रही हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू कंसिडर इट। आई थिंक इन फ्यूचर it will be a major game player in the overall energy production in the country, as the trend is increasing by 2 to 3 digit percentages on an year basis for the solar investments. जी ज़ील इंजीनियरिंग के साथ मेरा सफ़र 4 साल पुराना है। इस 4 साल में मुझे कभी किसी किस्म का कोई भी टेक्निकल फॉल्ट इनकाउंटर नहीं हुआ। I personally I choose their services because I like their professionalism और इनकी जो installation quality है that is at par with the standards required for this kind of a system. So I'm very satisfied with their service quality and their build quality as well which they have installed in my premises.